Basically, what we do here is, as I said last time, 8:30 to 9:30 is when we are going to discuss about the politics that is happening in the poll-bound state. Today, we are going to discuss about UP. As you all know, yesterday, Home Minister Amit Shah took the charge from the BJP side. He went to the Western UP, the land where the anguish against the BJP is seen at the maximum, because the Jaat community there, the dominant Jaat community, and also the farmers there, the dominant community, dominant electoral community, and after especially the farmers' protest, the Jaats and the farmers have turned against the BJP. Now, this was also the region that uh, voted BJP in large numbers in 2014, in 2017, as well as in 2019. But this time around, things look little difficult for the BJP, and that is why it was Amit Shah who took charge from the BJP side, and he went to this area with an outreach program, and he is trying to woo the Jat voters in this area. So today we are joined by our panelist, Mr. Amitabh Tewari is with us. He is a political analyst and a columnist as well. Mr. Prashant Konogia is with us. He is a national president of the RLD's SC/ST wing. So welcome all. And our managing editor, Mr. Sujit Nair, has also joined us. Rashtriya Jat Mahasangh state president Rohit Jakhar is also going to join us in some time. So we will have all these panelists talking about the Jat community, the Jat voters in Western UP, and importance of this community as far as the UP election is. So I'll just like to start with Amitabh Tiwari, sir. So what do you think about the Jat voters, importance of Jat voters? Because yesterday Amit Shah went to the Western UP and he talked about how Jat voters and BJP were connected to each other for last 650 years. See, essentially, the Jat community has been voting for the BJP for the last three elections. That is pretty clear in everybody's memory. But we forget that in 2002, when RLD came into existence, the first election it was fought in alliance with BJP. And RLD had won 14 seats then, which was its or which is its best performance till date in the state elections. So, uh, to say that the Jat community and the Muslim community have always been voting together and they have not been, or rather, they have been a new vote block for the BJP is perhaps not that correct. So, what BJP or Amit Shah wanted to do is that there is, of course, some disillusionment or anger amongst the Jat community due to the farmers' agitation, and then he tried to reach out to the leaders so that they do not damage the prospects of the BJP in phase 1 and 2. Remember phase 1 and 2, which is the larger Western UP region, including the Braj, has 113 seats, and BJP won 91 of them in 2017. So it's an important region for the BJP. BJP is facing pressure in the western as well as in the eastern flank, which have close to 60% of the seats in in the entire state, and that is why BJP has tried to make a make an audience with the Jat community. It is also trying to create a confusion amongst the Jat community by making statements or by making offers to RLD to come on board. So what it does is that it creates a sort of chaos, confusion among the minds of the Jat voters who have been voting for the BJP in the past elections and who have shifted towards BJP because of the Muzaffarnagar riots, and the scars of the riots are still there in the minds of people. So for BJP, for SP as well as RLD, this Jat Muslim combination which they are trying to revive is not going to be an easy task, and it is going to be a daunting task. And in this region, the Dalits also have a significant large presence, and Mayawati, even though she is not a contender, she Hmm. is a factor in these elections, and we will have to take that into account. Hmm.
Well, I think I would like to take that question to Prashant Kanodia. प्रशांत जी, आप नेशनल प्रेसिडेंट है आरएलडी के एससी एसटी विंग के, जैसे कि अभी अमिताभ तिवारी जी ने कहा कि एक साइजेबल दलित पॉपुलेशन भी है यहाँ पे, दलित वोटर्स भी है यहाँ पे, तो कैसे इम्पैक्ट करेगा अगर आप देखते हैं जाट कम्युनिटी को? कल तो अमित शाह जी ने ये भी बोल दिया कि हम तो जयंत चौधरी जी का साथ चाहते थे, लेकिन वो तो अखिलेश जी के साथ चले गए। देखिए, ऑलरेडी जयंत चौधरी जी ने इस पर बहुत ही क्लियर कर दिया है। आज भी उनका बयान है कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को दरअसल एक वहम हो गया है। और ये लोग, आप लोग देखिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये लगातार जाति विशेष के सम्मेलन कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक तरीके से माहौल बनाया जा सके। लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि देखिए, हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ, हर कम्युनिटी का एक सपोर्ट बेस होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो अमित शाह ने जाट कम्युनिटी को बुलाकर बात करने की कोशिश की, आप उनमें से जाकर पता कर लीजिए। उसमें बुलंदशहर के, जिसको उन्होंने गद्दावर जाट नेता बताने की कोशिश की, वो बुलंदशहर का युवा, बुलंदशहर जिले का भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री है। तो ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के खुद के भी कैडर हैं। जाहिर सी बात है, संजीव बालियान हो या फिर बागपत से जो पूर्व कमिश्नर हैं, जो सांसद हैं, क्योंकि उनके साथ भी तो एक तरीके का एक तबका जुड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, उनकी मीटिंग बुलाकर इस तरीके का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अ, एक लार्ज पर्सपेक्टिव बन चुका है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे जाटों की अगर बात करें तो किसानों के, 700 किसानों की जो शहादत हुई है, उससे उसमें खास एक बहुत बड़ी नाराजगी है। और जाहिर सी बात है, सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात ना करें, हम हरियाणा की भी बात करें कि हरियाणा में भी एक जाट कम्युनिटी एक बड़ा फैक्टर है और वहां से भी नाराजगी है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से किसानों ने पूरी तरह मन बना लिया है। और अमित शाह जी का तो रिकॉर्ड है। अमित शाह जी जहां जहां डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करते हैं, वो स्टेट तो भाजपा हारती है। दिल्ली उसका एक उदाहरण है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है। तो मुझे लगता है कि अब दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है, उसी की एक आखिरी कोशिश है अमित शाह जी की। और मुझे नहीं लगता इसका कोई खास लाभ मिलेगा। एक वोट तबका तो देखिए, 100% तो यादव भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता। हम्म। 100% कोई भी कम्युनिटी किसी पार्टी को वोट नहीं करती। जाहिर सी बात है, हर कम्युनिटी में से 10, 20, 30% का एक पॉपुलेशन होता है जो विभिन्न पार्टियों में मौजूद होता है और उनको एक समर्थन दिखाता है। तो अमित शाह की जो कोशिश थी, वही एक कोशिश है कि अपने पार्टी में जो उनके मेंबर्स हैं, जो जाट कम्युनिटीज आते हैं, उनको इकट्ठा करके उन्होंने दिखाने की कोशिश की। और उसके अंदर आपने, उन्होंने एक भी नहीं बताया होगा कि इसमें कौन से खाप, जाट जाट कम्युनिटी का जो खाप है, किस खाप का उनको समर्थन था। चाहे बालियान खाप है, चाहे गोटवाल खाप है, चाहे खिनवा खाप है, चाहे वो तेवतिया खाप है, जितने भी खाप है, उनका तो कोई समर्थन नहीं था। अपने पार्टी कैडर को बुलाकर परसेप्शन दिखाने का एक, मुझे लगता है, एक हल्की सी, एक बहुत हल्का सा एक प्रयास अमित शाह जी का नजर आया। पर मुझे नहीं लगता उसमें कोई फायदा मिल रहा है। लार्ज एंड, मैं दलित कम्युनिटी की भी बात करूं तो दलित कम्युनिटी हो या जाट कम्युनिटी हो या पिछड़ा हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, या यहाँ तक कि युवा हो, उन सब ने मन बना लिया है कि ऐसी तानाशाही सरकार को अब इस प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं। कल इलाहाबाद के अंदर छात्रों पर जिस तरीके से लाठियां भाजी गई, ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता को मूर्ख समझने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। हम्म। जनता ने इंदिरा गांधी के घमंड को तोड़ दिया, तो योगी आदित्यनाथ के घमंड का क्या हैसियत है, मुझे लगता जी, आई थिंक रोहित जाखड़ जी हैं, ही हैज आल्सो जॉइंड अस। सो रोहित जी, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी मैं कि जो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात होती है, कि ये कहते हैं कि एसपी और आरएलडी जो है वो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, उस पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि अभी बीजेपी जो है वो भी जाट वोटर्स को कहीं ना कहीं से ऐसे लग रहा है कि उनको एक अपील करने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो वोट्स डिवाइड होंगे जाट जाट कम्युनिटी के बीच में? जी रोहित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक थोड़ा सा ऑडियो इशू है, सो आई विल डायरेक्ट दैट क्वेश्चन टू सुजीत सर. सुजीत sir, what do you think about this? Is BJP trying to create a confusion among the Jat voters in Western UP? First of all, thank you so much, Aarti. First of all, welcome to Mr. Tewari. I'm so happy to see Prashant Kanodia, our fellow journalist, sitting there as a politician. Prashant, so proud of you. I'm so happy to see you. And of course, Mr. Jakar, happy to see you too.
See, I definitely think that things are not going too good with BJP. This is what my understanding is. SP is doing a fabulous job. RLD with HP is growing. So somewhere down the line, yes, these are measures that are taken, like Mr. Tiwari rightly said, and like what Prashant rightly said, that you see, these are steps taken to confuse the voters. This is to put, to make the Jat voters confused whether, ultimately is RLD going to join BJP or not. So these are methods that are, you know, I would see it as desperate methods. So yes, definitely I see BJP now in the back foot, which I was kind of not so sure till last week, but now I am. Hmm. Amitabh sir, how do you see the role of farmers' protest in this entire political equation of Western UP? See, the Jat is an influential, dominant community, and what the farm bills did was that they antagonized this powerful vote bloc, and they are a fairly influential community also because they are the landlords, and most of the SC/ST Muslim population in the western region works on their field, so they are very influential as well. So they have tasted blood after the BJP has repealed the laws. So now the Jat community perhaps wants to prove that they are the kingmakers in the Western UP. And mind you, Western UP is again a bigger region which has 100 plus seats. Plus, the phase of election starts from Western UP. So if BJP does not do well in this region, the effect of that could be felt in other regions also because the voting moves from west to the eastern flank. So Hmm. the Jat community, see, any community votes for any political party for representation in power, Hmm. and to show the Jat community perhaps wants to teach a lesson to the BJP that they cannot mess with this influential community in the Western UP. If they can make BJP win elections in the last three elections, then they can also make them lose. This is what perhaps is the thought process. However, after the repeal of law, there is a section within the community now which feels that since the BJP has repealed the law and we have been voting for the party for the past three elections, and even late Ajit Singh ji had a relationship with the BJP in the past, as we discussed. There is a scope for rapprochement or conciliatory tone is being spoken about in some sections. And what is also happening is the fact that the SP and the RLD alliance also, we are seeing some tensions on the ticket distribution or on the seat distribution. One person has already returned the ticket. On one ticket, both the parties have contested. There is a larger anger amongst the Jat community because RLD has fielded some six candidates, even from a seat like Bagpat. There are also rumors or suggestions that SP has fielded its own candidates in some of the seats, which will be who will be contesting on the RLD symbol. So all is also not going very well in the alliance as we feel, because in any alliance, 2 plus 2 is not always equal to 5. It is 4 rather. It is always equal to 3 or 4. So whether the seamless vote transfer without any leakage happens from RLD to SP and vice versa, that is going to be a big challenge which this alliance will fail. And as Prashant ji was saying, that any community does not vote 100% for any party, but here we see that the Jats perhaps voted for around 50% Jats voted for BJP in 2017. And if the loss is not significant, let's say 20-30%, it does not impact BJP's health in a very substantial way, because the gap between BJP and the RLD SP combined, as I told, is 91 versus 18 or something Hmm. in the first two phases. So the gap is fairly big, and it's a very daunting task. Hmm. रोहित जी, आई थिंक ही कैन हियर अस नाउ। ये सवाल है मेरा आपसे कि ये जो जाट आरक्षण की बात जो है वो बार बार आ जाती है। पिछली बार आपने बोला था कि कम्युनिटी ने वोट किया था बीजेपी को ये सोच के कि जाट आरक्षण पे ये पार्टी कुछ काम करेगी। इस बार फिर से अमित शाह जी ने आके बोला है कि इस बार आप हमें जिता दो, फिर हम जाट आरक्षण पे काम करेंगे।
आपका भरोसा किस पे है, आरएलडी पे ज्यादा है या बीजेपी पे? आरती जी, good evening to everybody. Good evening to you. BJP has betrayed throughout three sessions of elections. That was assembly, parliamentary, and again assembly. They have promised us to implement our reservation in 2015. Prime Minister of India uh, said to us that it will be implemented in 1 year after making the committee. But unfortunately, they haven't discussed about this. So committee is the larger way to go. And this is the normal process they are doing after before every elections. Rather it be 2014, 2017, 2019, and again in 2022. They all have been fielding this Jaat representatives are coming, they are having a meeting, but this time the scenario is different. Community has realized that they are betraying every time, and it seems now that we have to teach them a lesson. So we are united because it has started from 2014 itself. They betrayed in 2015. Then, if I say, can I process or speak up in Hindi, if you don't Yes, mind? Yes, yes, please, yes, please. please. 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया और कहा कि इसी तरह एक मीटिंग बुलाई थी, कहा कि रिजर्वेशन हम लागू करेंगे, क्योंकि स्क्रैप भी इन्होंने ही किया था। चौधरी अजीत सिंह ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के रिजर्वेशन दिलाया था कम्युनिटी को, और इट वाज नॉट फॉर यूपी इटसेल्फ, पूरे देश के स्टेट के जाटों को केंद्र में आरक्षण की बात थी। फिर 2016 में जब युवाओं में आस जगी कि शायद हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मिलेगा, तो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ हरियाणा में, और पहला इंसिडेंट उस प्रोटेस्ट में जो हिंसक हुआ वो महर्षि दयानंद सरस्वती रोहतक विश्वविद्यालय पे हुआ। वहां पे एक पंजाबी डिप्टी एसपी ने कास्ट पूछ के लोगों को बर्बरतापूर्ण लठियाने का काम किया, मारने का काम किया, हाथ पैर उसमें टूटे। उसके बाद आंदोलन उग्र हुआ, और उसमें उस घटना में कोई भी गोली जो पुलिस की तरफ से चलाई गई वो सीधा लोगों की छाती पे चलाई गई, ना कि किसी के अंडर बॉडी पे। तो उनकी मंशा साफ थी, लोगों को पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का क्रूर चेहरा है। लेकिन 2017 में फिर इन्होंने इलेक्शन से पहले एक वादा किया, एक बिजनौर में घटना करी जिसको सांप्रदायिक रूप दिया गया। बिजनौर में एक भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने 125 बार चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया, और चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष के नाम से ऐलान किया कि सरकार आते ही हम इसका गठन करेंगे हर जिले में। लेकिन फिर वही, इन्होंने गठन की तो फिर दूर की बात है, उसमें चर्चा भी पूरे 5 साल नहीं की। फिर ये आ जाते हैं 2019 में जब इलेक्शन खत्म होते हैं, तो इन्होंने स्थापित लीडरशिप को हराने का षड्यंत्र से काम किया, और जब स्थापित लीडरशिप हारी तो इनके वरिष्ठ प्रवक्ता राज्यसभा सांसद ने चौधरीयों की चौधराहट खत्म कर दी कि उससे एक स्टेटमेंट राष्ट्रीय पटल पे दिया। फिर 2020 से इन्होंने फार्मर्स लॉ ले आए, उसका एजिटेशन शुरू हो गया, उसमें भी अग्रणी जाट थे। अगवा हमेशा आंदोलन के देश में ये हमारे जेनेटिक्स हैं कि हम अगवा रहे हैं, बाद में सब लोग उसमें जुड़ गए और बर्बरता हुई, उसमें लाठियां बांधी गई, लोगों पे मुकदमे हुए, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया सब पे मुकदमे किए गए, लोगों को डेमोलिशन के उनके मकानों के ऑर्डर अथॉरिटीज ने दे दिए, गिरफ्तारियां हुई, अंततः टैनी वाला मामला हो गया। इतना आप ये समझिए कि संवेदनहीन कृत्य था ये, कि अगर किसी व्यक्ति की पशु पे भी गाड़ी चली जाए तो भी उसका दिल सहम जाता है, वो गाड़ी रोकता है।
लेकिन यहां तो दिल सहमने की तो छोड़िए, इन्होंने इंटेंशनली जिंदा लोगों पे गाड़ियां उतार दी, और वो जिसके पुत्र ने उतारी वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है। और ये बात करते हैं कभी ये एसपी कैंडिडेट के नाइद हसन की बात करते हैं, कभी गुंडों की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, तुम नाइद हसन की बात करते हो, हम टैनी पे क्या आपने किया? तो एक मतलब ये जो है ब्लेम गेम के अलावा अपने गिरेबान में झांकने का कोई काम नहीं कर रहे। और ये शुरू हुआ था 2014 में, जब ये चुनाव जीते तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह का सामान इन्होंने सड़क पे रख दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सबको समय दिया जाता है, बिजली काट दी, पानी काट दिया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वहां भी इन्होंने बर्बरता की थी। हाथरस में दलित लड़की के साथ जो हुआ था वो सब जग जाहिर है, उसमें सब नेता हाथरस गए, प्रियंका जी गांधी से भी धक्का मुक्की हुई, लेकिन केवल लाठीचार्ज और बर्बरता जयंत चौधरी के साथ हुई। तो बार बार हमारी कम्युनिटी को के सेल्फ रिस्पेक्ट को डेंट करने का और चैलेंज करने का काम कर रहे थे। आज सारे लाइन ऑफ इनके इंसिडेंट्स देखे, कम्युनिटी को समझ में आया कि भाई लगातार हमारी अस्मिता पे प्रहार हो रहा है, तो हम लोग एकजुट हो गए। आज एकजुट हो गए तो फिर उन्होंने जाट जाट का गाना आलापना शुरू कर दिया। कल जितने लोग बुलाए गए सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हारे हुए जिला पंचायत अध्यक्ष, जीते हुए जिला पंचायत सदस्य, हारे हुए सदस्य, यही लोग थे। कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन किसी भी मुख्य व्यक्ति जो समाज में कर रहे हैं, ना तो उन्हें इनविटेशन था, ना किसी को बुलाया गया, ना कोई गया। तो आप जो इनका तरीका है, लाइन ऑफ एक्शन है थ्रू आउट फ्रॉम 2014 टू नाउ, तो इन्हें अब समझ में आ गया। इनके सर्वेस बता रहे हैं कि शुरू के पहले फेज में 126 सीटें आती हैं, जिसमें 106 जीते हुए हैं। जाट पूरे देश में 90 लोकसभाओं पे अपना आधिपत्य रखता है, निर्णायक भूमिका निभाने में। और इस बार एक उत्तर प्रदेश की 26 लोकसभा सीट, मतलब 126 सीटों पे निर्णायक भूमिका में है। तो आप रिजल्ट देख लेना, 126 सीटों में से 106 है इनके पास, अगर 20 भी रही तो अतिशोक्ति होगी। Amitabh sir, as he is saying that there are 126 seats in which Jats are influential, and this time around they won't even have 20 seats with them in Western UP. What do you think? I think Mr. Sujit sir is also trying to say something, sir. No, he can answer. I want to ask one question to Prashant ji. So Yes. you please let I think Mr. let us Tiwari go answer. to Amitabh sir answer. Please let Sir, Mr. what do Tiwari you answer, think? and then How many seats can BJP win in this election in 120 among 126 seats? देखिए, Rohit ji has used a very important word which is called, or which he has used, is betrayal. So what I feel is that the Jat community is a fairly emotional voter, and this word coming from him, and if he indeed represents the larger community, then it could lead to some loss of seats for the BJP in these regions. How many seats is actually lost depends upon the seamless transfer of the vote between the SP and the RLD candidates on the ground. I have done a simple uh, scenario analysis. For the first two phases, as I said, 91 seats are with BJP out of 113. So if there is a 5% movement of vote share away from BJP to RLD SP, and a 5% vote share move from BSP to SP RLD, then BJP could lose up to 30 seats here. However, this 10% is a fairly big swing. I'm not saying it doesn't normally happen. It happens when there is a lot of anger or akrosh among the voters. So we'll have to see how this actually pans out. One thing is also fairly important to point out here is that the Jats on a stand-alone level may not be able to impact all the 126 states. They become a potent force only when you add Jat plus Muslim community, and that is why the alliance between the SP and the RLD has been formed in the Western UP. Hmm. I think uh, Sujit sir, you wanted yeah, to ask. yeah, yeah, yeah. Uh, प्रशांत, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, और एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन पूछना है आरएलडी के बारे में।
देखिए 2012 में 2012 में आरएलडी ने 46 सीट्स में खड़ा हुआ और आरएलडी वन 9 सीट्स आउट ऑफ 46 सीट्स। 2017 में जब सो कॉल्ड मोदी वेव जब था और बीजेपी वाज डूइंग फिनोमिनली वेल, तभी आरएलडी ने 171 सीट्स में उन्होंने अपना दे स्टूड एंड दे वन ओनली वन सीट। अब प्रशांत, what I want to understand is what was going on in RLD's mind? ये स्ट्रेटेजिक प्रोसेस क्या था, क्या सोच रहे थे वो और क्या था उनका प्लान तब? Actually, Sujiji, when in 2017 election, we were supposed to be in the alliance of Congress and Samajwadi Party. So it was well planned, well drafted everywhere. People were talking about it. We are contesting together and we're going to win this election at any cost. But suddenly, what happened? There was some seat sharing issue, and the alliance was broke down, and the RLD parted away and contested alone. So basically, we didn't plan to contest on that much seat, but it was a decision which was taken due to we were not in the alliance, so that's why we have to fill a lot of candidate, and not, everyone was not that sort of prepared to contest election. So that was the result, and because uh, due to the aggressive politics what BJP did in the Muzaffarnagar area, which basically impacted the whole Western UP region. Basically, the wounds of the 2014 riot wasn't healed at that point of time, and because of that, a lot of vote got transferred to the BJP. But as of now, I think there are a lot of changes has happened, not only because of the elections, but continuously what happened in the last 2019 Lok Sabha election when our leader, our former leader Ajit Singh ji, decided to contest on the Muzaffarnagar. It was not the decision to win the election, but he wanted to uh, set the example and that was the first time when Muslim and Jat came together to support Ajit Singh, and the election result was, he lost by I think margin of 5,000. So that was I think was a brave step by late Ajit Singh ji, and it basically started healing the wounds of 2013 Muzaffarnagar right, and then later on the farmer protest happened, and the way Yogi Adityanath used to challenge the farming community कि लखनऊ आके दिखाओ देख लेंगे, लखनऊ आके दिखाओ देख लेंगे, and 700 farmer died. So basically, community started realizing, and I wanted to give one more fact. When India had a partition in 1947, and if you subsequently Muslims are in high number in Western UP in comparison to other parts of UP, and that is not that doesn't come as it like it happened suddenly that Muslim has a large population, but in fact the Khaps which is present in the Western UP, they did lot of panchayat during the partition of India, and they basically put lot of effort to stop Muslim, which basically the Muslims who planned to go to Pakistan. So basically, their effort helped Muslim to stay back in India and stay back in their own land and keep doing farming. And the result, the way the politics happened during the Chaudhry Charan Singh time, the equation basically helped keeping the farming element at the top of the politics table, because nowadays nobody talks about farming. During election we talks about farmer, but at that point of time people used to talk, and that is the reason I think people have understand that they want those days back when the farming community together irrespective of their religion caste is to fight together on the boat club, and the way it happened in the border of respectively all the borders of Delhi. So I think it's a time people have started introspecting, people have started regretting what they went through and the politics what BJP does, and they have also started realizing this, that the politics what BJP does, it is not the politics of the people, it's basically politics of the people who wants to rule this country, the politics of the people who wants to influence their caste system deep down in the society, and that is what happening now. People have started realizing, and I like to congratulate everyone. Rohit ji is with us, and I would like to congratulate him that he started talking about this, and I personally got a lot of inputs specifically related to the Jat community, the betrayal what JP did with them, continuously promising them
the Jat Arakshan. I know people know this, that BJP has promised 2 crore rozgar also. BJP promised the petrol price of 50 rupees also. BJP promised a lot of things, but they failed to do everything. And this is also another jumla by Amit Shah ji to the Jat community, and they're gonna not fall for this promise at this time. Hmm. Yes, sir. I think you are My on mute. Sorry. One more question I wanted to ask Rohitji. Rohitji, like what Mr. Tiwari said, and I completely agree to him. The power of Jat comes from the fact that when Jats and Muslims are united, and it has always been that way historically. Why did this unity? Was there a break in this unity? Sujit ji, we had close association with and harmonious relations with the Muslims. And as Prashant told, that during partition, our Khap panchayats holded them back that you will stay here because of this harmony. But unfortunately, what does what that was not happened in 1947 partition time. It happened in 2013 Correct. because of the conspiracy made by BJP. As you know that in that revolt or riot, Jats suffered a lot. The cases were registered against Jats. People died from Jat community, and the leaders who became was from other communities like Thakur, Gujar, Sangeet Som, Suresh Rana, Hukam Singh Gujar, Nandlal Gujar, and so on. Because they were playing conspiracy against us. They wanted to break this harmony. Then and then only they could revive in UP, and they did it in their best way. And we were trapped in their conspiracy. And during whole in scenario, we fought our cases in High Court, Supreme Court, and at the end, Chaudhry Ajit Singh, he is no more, but we have heartiest gratitude towards him. He stood with us. The KTS Tulsi, the highest, you can say that he is the famous prosecutor of India. He was fielded from our side with his help, and he never took a penny from us due to Chaudhry Ajit Singh. So our community sooner or later realized that we were trapped, and Chaudhry Ajit Singh didn't have any stake in it. And as we suffered, Chaudhry Ajit Singh also suffered because the vote bank was same. Vote bank was the harmony of Jats and Muslims. And today itself, and this Kisan protest, farmers protest, you can say, this made us come together. And this is the cause that Jats and Muslims are together today. And BJP is, they are very much afraid. The Home Minister of India is going door to door. This is, they are so afraid of us, our unity, that they are playing any game. But every game they are playing, every conspiracy they are making, it is going in revert towards them. And you will see the results. Results will come in favor of us. Results will come in favor of farmers. Results will come in favor of harmony. And we will prove this bhaichara in front of whole society in India and abroad. You will find this out. Amitabh sir, as much as the leaders of the political party and the community leaders might want to say that there is a harmony between the two communities, I hope there is a harmony between the two communities. There are certain factors on the ground that have happened and that have been reported. One seat that particularly I think Jat leaders were unhappy about was the Sibal Khasa seat. And they were unhappy that a Muslim candidate from the Samajwadi Party was contesting on RLD ticket from Aarti, that. I would like to intervene on this. Sorry to intervene you. I Jats protested against the participation in election in Meerut district because none of the constituency Jats were placed as a candidate. But after this protest, they placed a Jat candidate in Meerut constituency. It was not matter of Muslims or Jats because one Jat is placed from BJP side also. There is no issue.
There is no issue of harmony. There is no issue of Muslim. Muslim is not an issue for us now, and it was not an issue for us in past days also. That was a conspiracy, and we were trapped. We admit it, and in future it will not be commit any mischievous characters will not be spared by our community. This we have committed. We have this, we have find them out who are the conspirators, and we will use our right of vote to make them out from the power. All right, but the question was, will the BJP try to somehow, encash this sentiment among Jats and Muslims? आरती जी, गृह मंत्री कैराना जाते हैं, घर घर पर्चे बांटते हैं, लेकिन एट द एंड उन्हें रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, कोई नैरेटिव वो बना नहीं पाते, क्योंकि ग्राउंड पे मुद्दों की बात हो रही है। ग्राउंड पे बेरोजगार अब आज पिटने इलाहाबाद में, और कितनी बर्बरता की जा रही है। ग्राउंड पे वो जिन्ना की बात कर रहे हैं, हम गन्ने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 1,52,000 करोड़ रुपए भुगतान गत 5 वर्षों में किया। हम कहते हैं कि गत वर्ष में कितना बकाया है वो आप बताइए। हम उनकी मंशा आप इस बात से देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ऑर्डर करता है पेमेंट के लिए, कंटेम्प्ट करता है केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के खिलाफ, और के गन्ना मंत्री शामली जिले से आते हैं, थाना भवन कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका खुद का भुगतान आज तक बकाया है। भले ही वो बताए ना, वो ऑन रोल ना आ पाए, आप लोग चेक कर लीजिएगा उनके खाते, उनके गन्ने खाते का अकाउंट लेके चेक कर लेना कि उनका भुगतान भी पहुंचा है या नहीं पहुंचा। और वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं रोक के लिए कि हमें भुगतान किसानों को ना करना पड़े। तो अब मंशा लोग समझ चुके हैं, लोगों को सत्य पता है, और लोग मुद्दों पे पूछना चाहते हैं, भाई स्वास्थ्य और शिक्षा के क्या हालात है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी के क्या हालात है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था के क्या हालात है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में किसानों के क्या हालात है। आप एनपीके और यूरिया लाइन लग के नहीं मिल पा रहा, शॉर्टेज है। आपने 50 किलो का बैग 45 किलो का कर दिया, रेट दुगने कर दिए, डीजल पेट्रोल के रेट दुगने हो गए, और आप कह रहे हो कि किसानों की आय दुगनी करेंगे 2022 में। 2022 तो आ चुका, अब हो सकता है 2028 तक ये दुगनी कर दें, इसलिए 5 साल के लिए कह रहे हो कि इस बार भी हमें वोट दे दो। अरे भाई, वोट बिट्रेयल से नहीं मिलेगा। हमारी जाति स्वाभिमानी जाति है, अस्मिता की लड़ाई लड़ना जानती है, धोखा बर्दाश्त नहीं करेगी। प्यार से मांगते तो सब कुछ देते, धोखा नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जो आरती जी, एक बात, जो इन्होंने जयंत चौधरी के साथ किया, जो हाथरस में हुआ, वो इन्होंने हमारे जमीर को जगाने का काम किया है। जो बाकी सब नेता आगे पीछे गए, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। जयंत चौधरी के साथ जो घटना करी, जो बर्बरता करी, वो जवाब इन्हें माकूल दिया जाएगा। और अभी ये सोच से परे है कि कितना बड़ा जवाब होगा। मुस्लिम हमारे लिए फैक्टर ही नहीं है, कि कितना भी हिंदू मुस्लिम बात करें, हमारे लिए जो फैक्टर है वो सत्ता परिवर्तन है। जो किसानों के हित की बात करेगा उससे बात करेगा। मैं आपके सिवाल खास वाले सवाल पे ही जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि सिवाल खास को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई कि मुस्लिम कैंडिडेट है, इसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा जबकि है नहीं, मुस्लिम की वजह से नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जब आप गठबंधन की पॉलिटिक्स में रहते हो तो आपके भी लोग वहां तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे पार्टियों के अपने अपने कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि गुलाम मोहम्मद वहां से पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी पार्टी लगातार उनके खिलाफ चुनाव लड़ती आ रही है। तो जो पार्टी में इच्छुक होते हैं टिकट को लेकर, जो तैयारियां कर रहे होते हैं चुनाव लड़ने की, जैसे जब गुलाम मोहम्मद साहब को टिकट मिला तो जाहिर सी बात है जो लोग टिकट की कोशिश कर रहे थे उनके समर्थकों में एक नाराजगी होगी, और ये बहुत स्वाभाविक है, लोकतंत्र में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप अभी का मसला पूछें, मेरी कल ही बात हुई है, जितने भी लोग सिवाल खास के जिम्मेदार लोग हैं वो कल आए थे, और कल हमने काफी लंबी चर्चा की। और आप ये देखेंगे कि गुलाम मोहम्मद जब जितने वोटों के मार्जिन से समाजवादी पार्टी के सिंगल तले 2012 में जीते थे, उससे डबल मार्जिन से 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में जीत कर आएंगे, और वो भी नल के निशान पर आ रहे हैं। तो वो तो लोकदल के विधायक होंगे, और लोग पूरा सभी लोग इन्फ्रिंज एलिमेंट का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, पर जितने भी समझदार लोग हैं, जिनके मन में किसानों के प्रति संवेदना है,
जिनको लगता है कि वो 700 किसानों को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए वोट की चोट से, वो लोग गुलाम मोहम्मद साहब को इस बार सदन के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का नहीं है, लोग समझ गए कि यही हिंदू मुस्लिम करने की वजह से आज हमारी ये हालत हुई कि हमें 13 महीने बॉर्डर पर बैठना पड़ा। ये इसी हिंदू मुस्लिम की वजह से आज ये हालत हुई कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए और प्रदर्शन नहीं होते इस देश के अंदर। इसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने देश की इकोनॉमी, जीडीपी और सभी चीजों को आज गिरा दिया। आज हमारी जीडीपी कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी दरें 45 साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई। ये सारी चीजें जनता देख रही है। और ऐसा नहीं है, देखिए अमित शाह का बेटा सेटल हो गया, इसका मतलब ये नहीं किसान का बेटा सेटल हो गया। तो किसान अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और वो इस बार जवाब देगा। और फिलहाल खास ही नहीं, आप जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको भी ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं है। भाई मुसलमान, जहां आप मुजफ्फरनगर में देखिए, वहां मुस्लिम कम्युनिटी जाटों को वोट कर रहा है। सिवाल खास के ऊपर जाट कम्युनिटी मुस्लिम को वोट कर रहा है। सही कह रहा हूँ, हारमोनी बन चुकी है। और मुझे लगता है कि पतझड़ कितने भी हों, जो फूल खिलने हैं वो खिल के रहेंगे। तो भाईचारा कितना भी खराब करने का कोशिश किया हो, वो भाईचारा वापस स्थापित होना है और वो होके रहेगा। वो अमित शाह भी नहीं रोक पाएंगे और योगी आदित्यनाथ भी नहीं रोक पाएंगे। Hmm. Amitabh sir, as the leaders rightly said, there is one campaign from the SP and RLD of Bhaichara Sammelan. They have been, especially since the farmers' protest, there have been Bhaichara Sammelans that have been organized by the RLD. Even Rakesh Tiket had given one nara. I think everybody would remember. He said "Har Har Mahadev" and "Allahu Akbar." That was an old slogan that was revived by him this time around, versus BJP, which is trying to constantly polarize this election between Hindu and Muslim. Who will have an upper hand? See, I'm not a voter of Uttar Pradesh, and I think we all three are not, perhaps. And the other two gentlemen are, so they are more involved and emotional about the state per se. But I see it from a third party angle. Any state government cannot win an election without performing on its promises. So the incumbent government has to perform. If it has performed, it will win. If it has not, it won't. That will be decided on March 10th. On the aspect of the Hindu, the Jaat Muslim Bhaichara and stuff like that, that is happening, and that is why perhaps the alliance between the Samajwadi Party and RLD is working on the ground. However, from a third party neutral perspective, when RLD plus BSP plus SP, all of them had contested together in 2019 Lok Sabha election, both late Ajit Singh and Jayant Chaudhary lost their elections from Lok Sabha. Number one. Number two, we are talking about two communities here, Jats plus Muslims. They are not 100% of the population, and there that is where the angle of consolidation, polarization, and counter polarization comes in. They are perhaps at the max on an average 35, 40, 45% of the population of Western UP. However, there is a 55% population which the BJP is targeting, or is its core vote bank, let's say. And what happens is that when this sort of consolidation is happening between the Jat and the Muslim community, there is a high chance that the other 55-60% gets polarized, counter polarized, counter consolidated, whatever you call it, in favor of BJP. If the demographics of the place is such, then the past results show that polarization has worked here. So to say that polarization may or may not work, I mean, we'll have to wait for the results. But as a strategy, BJP will be focusing on the non-Yadav OBC vote here, on the upper caste vote here, and the 23% vote of Mayawati in these seats. Where is that vote going? There is already a division of Jatav, non-Jatav among the Dalit community. The non-Jatav has already, in large numbers, started voting for the BJP in UP. The numbers show that. So what happens to the Jatav voter, who is the committed voter of BSP, in this bipolar election? Does he or she decide to stay with the BSP, or decides to vote for one of these main contenders? That is probably going to be, I would say, the kingmaker in this region, because
the dominant castes are never the kingmakers because BJP also has put up 17 Jat candidates. So what happens is that the Jat vote gets split. BSP has put up, I think, 10 Muslim candidates on seats where SP and RLD both have put up Muslim candidates. So the Muslim vote will also split. So the non-dominant communities, which is a larger number, perhaps is going to decide who wins this battleground of 113 seats in phase 1 and 2. Hmm. So there is one question in the comment box about Azad Samaj Party, because at one point of time it was believed that Azad Samaj Party will eventually replace BSP because BSP had been inactive for a long period. Do you think that it can happen this time around? That can Azad Samaj Party somehow replace BSP and get votes of the Dalit community in Western UP, or in fact in entire UP, because they are contesting on all seats now? It's for whom? Amitabh sir, for you. Sorry, the network was bad. I just didn't hear Yes. this at all. The question was, I think somebody in the comment box has also asked us this question, that Azad Samaj Party, can it replace BSP, and can it get the vote base of the BSP on its part? It may take 2, 3, 5%, but not significant dent. Because what Chandrasekhar Azad has done is that if he has to emerge strategically as a leader of Dalits, then he has to probably challenge the Dalit leader of BSP or the or UP, which is Mayawati. Correct. So you have to probably target or try to emerge as the real leader of Dalits, then go and waste your efforts, in my opinion, than a seat on Gorakhpur, where the Azad Samaj Party is not strong enough anyways. So the party is strong in Western UP, and when they put up candidates, what it also does is that it leads to a split of votes. Split of votes normally always favors the incumbent. Uh, Aarti, may I ask? I want Yes. this. Aarti, I want to ask Prashant a question. Prashanti, where is Dalit votes going? Are they still with BSP? They are moving out with BSP. People say they have moved out of BSP already. अगर वो बीएसपी से मूव आउट हुआ है तो देन वेयर इज इट गोइंग? इज इट गोइंग टू समाजवादी? इज इट कमिंग टू आरएलडी? वेयर इज दलित वोट्स गोइंग? देखिए 2019 में समाजवादी, बीएसपी, एनआरएलडी साथ में मिलकर इलेक्शंस लड़े और एक कॉमन सेंटिमेंट लोगों के अंदर आ रहा था और कि भाई इस अलायंस को जिताना चाहिए। क्योंकि जब रिजल्ट आए इलेक्शंस के और उसके बाद बहन जी ने अलायंस को तोड़ा, तो उसका सबसे ज्यादा जो धक्का लगा वो दलित कम्युनिटी के बहुत सारे युवा तबका को लगा, जो बहुजन आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, जो अम्बेडकरिज्म को एम्ब्रेस करके खुले में ये बोलने को तैयार है कि वो अम्बेडकरवादी है। उस युवा तबके को सबसे ज्यादा इस चीज से धक्का लगा कि सडनली मतलब अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए ज्यादा सीटें भी दी और उनके ज्यादा एमपी भी जीत कर आए, उसके बावजूद भी बहन जी ने उस अलायंस को तोड़ दिया, तो एक धक्का लगा और उससे एक तरीके की नाराजगी उत्पन्न हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहन जी का बहुत बड़ा वोट खत्म हो जाएगा, बहन जी का जो भी एक वोट परसेंटेज है 15-16% जो उन्हें मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 2-3% पे आ जाएंगी, पर मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर 63 डेज का न्याय यात्रा किया, जिसके अंदर मैं उत्तर प्रदेश के इन 13 जिलों में, नोएडा से लेकर आगरा तक सभी जिलों में और कई कस्बों में मैंने जाकर दलित कम्युनिटी से बात की। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रेटेजिकली मतलब इमोशनली दे गोना वोट फॉर समाजवादी पार्टी आरएलडी अलायंस, बट स्ट्रेटेजिकली जो युवा तबका है, जो 18 से 40 के अंदर वाला जो युवा है, ये स्ट्रेटेजिकली समाजवादी आरएलडी को वोट करेगा, बिकॉज द वे बीजेपी ने उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे गोरखपुर का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, घोड़ी चढ़ने पर मारपीट होती है, मूछ रखने पर मारपीट होती है, अभी आगरा के अंदर हुआ कि किसी ठाकुर साहब को नमस्कार नहीं किया तो पैरों में गोली मार दिया। तो ये सारी चीजें दलित कम्युनिटी देख रहा है और आप देख रहे हैं कि मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि दलित कम्युनिटी के अंदर एक गजब का असर्शन आया है। पिछले 5-10 सालों में मैंने ये देखा है कि खासतौर पे जो युवा तबका है उसके अंदर एक गजब का असर्शन है और उसी असर्शन का नतीजा आप ये देखेंगे कि बड़ा वोट बैंक, मैं सिर्फ जाटव्स की नहीं बात कर रहा हूँ, नॉन जाटव्स का भी एक बड़ा वोट बैंक आप देखेंगे समाजवादी आरएलडी को
स्ट्रेटेजिकली वोट कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ अभी उनका अंदर इमोशनली वो कनेक्ट नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, वो एक स्लो प्रोसेस है, उसमें समय लगेगा, पर स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा तबका वोट करेगा जो बीजेपी को इस बार सत्ता से बाहर रखेगा। Very good. So, tell me, is Bahujan Samaj Party still managing to hold on to the Dalit community, Prashant, or are they moving out of them? That's the question I wanted to kind of get clarity on. देखिए, दलित कम्युनिटी डेफिनेटली बहन जी का बहुत बड़ा एक सपोर्टर रहा है, और दलित में भी खास तौर पे जो नॉन जो जाटव नहीं, कम्युनिटी मैं है वो इसलिए उनका एक पूछ रहा हूँ प्रशांत प्रशांत, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अब ब्राह्मण भी है बहुजन समाज पार्टी में, दलित भी है बहुजन समाज पार्टी में, तो थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा हॉचपॉच सा लग रहा है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे और एक बार पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए, मान्यवर कांशीराम की पार्टी है, उन्होंने बनाई पार्टी, उनकी एक ट्रेनिंग है, उनका एक तरीका था पॉलिटिक्स करने का, उनका एक तरीका था समाज को जोड़ने का, खास तौर पे नॉन यादव ओबीसी की भी अगर हम बात करें, जो उसमें छोटी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो मल्ला हो, चाहे वो लुनिया राजपूत हो, ऐसी छोटी छोटी कम्युनिटी, मौर्य हो, पटेल हो, उनको मेनस्ट्रीम किया यूपी के पॉलिटिक्स के अंदर, वो कांशीराम जी की देन थी। लेकिन आज जो हालत है, आज एक तरीके से कहूँ कि बहन जी दलित कम्युनिटी की नजर में उनको ये फील होता है कि बहन जी आज कहीं ना कहीं दबाव में है, और कहीं ना कहीं गिरफ्त में है, उनके पार्टी के ऊपर सतीश मिश्रा का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। तो लोगों में ये भय है कि, और मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा भाषण मैं राष्ट्रीय लोकदल के मंच से खड़े होकर देता हूँ, वैसा भाषण अगर मैं बीएसपी में होकर देता तो मुझे अगले दिन पार्टी से निकाल दिया जाता। तो एक तरीके का रेजिस्टेंस हो गया है कि आप कांशीराम जी को फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन उनके उनकी बातों को प्रचार प्रसार नहीं करते, उसका एक गुस्सा है लोगों के अंदर, और वो इस बार झटका देंगे। मतलब एक तरीके से वो पॉलिटिक्स ही नहीं कर रही है, हाथरस की बेटी के साथ मामला हुआ, वो गई नहीं जबकि उनको जाना चाहिए था, और कांशीराम जिंदा होते तो वो जरूर जाते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मार्ग से वो भटक गई है, जिसका नतीजा दलित समाज उनको इस बार एक तरीके से पनिशमेंट देगा। आप ये देखिएगा, मैं इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड में कहने को तैयार हूँ कि इस बार आप देखेंगे बड़ा लार्ज चंक इस बार समाजवादी आरएलडी को वोट कर रहा है टू डिफीट बीजेपी। आई एम नॉट सेइंग कि दे पर्सनली हैव इमोशनली कनेक्टेड विद समाजवादी पार्टी आरएलडी कंप्लीटली, बट स्ट्रेटेजिकली दे गोना डिफीट बीजेपी बाय वोटिंग समाजवादी एंड आरएलडी। करेक्ट। जाकर जी, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसका एक्चुअली मेरे पास दो क्वेश्चन है, तो मैं तीनों को पूछूंगा, और मेरे को तीनों को ये दूसरा क्वेश्चन भी पूछना है। क्वेश्चन नंबर एक इज, वोट किसको जा रहा है? योगी को जा रहा है कि मोदी को जा रहा है उत्तर प्रदेश में? मतलब लोग वोट किसके लिए कर रहे हैं? अगर मैं जो मैं बीजेपी की वोटर्स की बात कर रहा हूँ, वोट किसके लिए जा रहा है? योगी के लिए क्या मोदी के लिए? सर, रोहित जी, आपका शायद से माइक म्यूट है। माइक, योर माइक। या योगी जी के मतलब मोदी जी की इमेज को काफी डेंट लगा है। किसान आंदोलन में जो उनकी संवेदनहीनता रही, लोगों के मन में एक सवाल है कि कृषि कानून ठीक थे तो हटाए क्यों, और गलत थे तो लाए क्यों। और ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट टाइम ऑफ लगभग 13 महीने मोदी जी ने या मोदी जी की कैबिनेट के किसी भी व्यक्ति ने कभी यह सोचा ही नहीं। मैं कहता हूं अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं किसानों के बीच में जाके इसको रिपील करता। इतने स्ट्रेटेजिकल व्यक्ति, इतना बड़ा तामझाम, इतने ब्रेन उनके पीछे लगे हुए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वो चूक गए। उन्हें लगा किसान महत्व नहीं रखते। वो इतिहास को या तो उन्होंने अध्ययन नहीं किया या उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा गुस्सा है बहुत बड़े वर्ग में। ठाकुरवाद चरम पे है उत्तर प्रदेश में आज की डेट में, चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकगण हैं वो कौन नजदीक है, किनकी चलती है, उनका आप पूरा एनालिसिस कर लो। तो ठाकुरों के खिलाफ भी एक लामबंदी है पूरब में। पूरब में तो ब्राह्मण और ठाकुर का ही आपस में प्रोटेस्ट है, तो क्लैश है। तो भारतीय जनता पार्टी जितना आसान इसको समझ रही है, ये हवा उत्तर प्रदेश पश्चिम से उठ के और पूरब के किस कोने में जाएगी और कहां ये उड़ के पहुंचेगी,
ये इनके जमीन को हिला के रख देगी। पूरब तक आप लोग बुद्धिजीवी हो, हम लोग सामान्य किसान परिवारों से आते हैं, थोड़ा अल्प ज्ञान रखते हैं, लेकिन इतना जरूर है, जहां तक हम घूमे हैं कृषि आंदोलन में, हम लगभग सब जगह गए हैं, हमने ये चीज महसूस की है। और जो टहनी का इस्तीफा इन्होंने नहीं लिया, वो भी ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं ये दिखाने का काम किया है कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं। इस कृत्य के बाद भी अजय टहनी का इस्तीफा नहीं हुआ। तो लोग सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं, सामान्य व्यक्ति भी जानता है, सब सोशल मीडिया पे है। तो जाकर साहब, मेरा क्वेश्चन वापस मैं एक बार बता दूं, तो एक्चुअली वोट किस पे जा रहा है? योगी के लिए दे रहे हैं लोग कि मोदी के लिए देंगे लोग? उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को वोट देते हैं, हु इज द पैक? इन्होंने एक परसेप्शन बना दिया सुजीत भाई, यस, छदम राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देने का, लेकिन वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो छदम राष्ट्रवाद है। इन्होंने एक परसेप्शन बना दिया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बात करेगा वो राष्ट्रवादी, जो अपने मूल मुद्दों की बात करेगा वो आतंकवादी। ये इन्होंने खाई पाट दी है, वैमनस्यता बना दी है समाज में। तो जो लोग छदम राष्ट्रवाद के उस हरे चश्मे के साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी के साथ है, जैसा मुझे अपना गट फीलिंग है। योगी के लिए लोगों के मन में है कि कुछ भी है शायद ईमानदार, ऐसा लोग क्वेश्चन मार्क लगा के कहते हैं। प्रशांत जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? गिव मी योर ओपिनियन क्विकली। मोदी के लिए वोट दे रहे हैं कि? मुझे लगता है मोदी के लिए दे रहे हैं। जो भी बीजेपी का वोटर दे रहा है वोट, वो मोदी के लिए दे रहा है। ऑनेस्टली मैं पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड भी जाकर आया हूँ। योगी के खिलाफ बड़ी नाराजगी है, मोदी के खिलाफ इतनी नाराजगी नहीं है, जो मुझे फील हुआ पर्सनली। क्योंकि जब से योगी आए हैं, उनका एक काम करने का जो स्टाइल है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में एक ना भय का माहौल बन गया। तो उस भय के माहौल में लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते कि ये व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से गवर्नेंस करना है, बिकॉज उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो ही वॉज वेरी पॉपुलर इन गोरखपुर, बट ही वॉज नॉट मास लीडर ऑफ उत्तर प्रदेश when he before becoming a chief minister. So I think whatever BJP people thinks, they're gonna vote for the Modi, not for the Yogi, because they also know that Yogi will not be the chief minister of Uttar Pradesh. BJP still wins the election. Jakar Saab, I'll just come to you. Before that, I would like Mr. Tewari to answer this question. I think there is some I network think issue. yeah. सुजीत Okay, भाई, Jakar साहब, एक बात मैं बताऊं कि योगी जी गुंडई करने के आदी रहे हैं गोरखपुर में, तो वो उनकी कार्यशैली में छाप छोड़ दी है, और अति महत्वाकांक्षा उनके मन में पैदा हो चुकी है कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लोग सब जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि वो अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री थे या चुनौती देके मुख्यमंत्री थे, ये भी सबको पता है। और विधायकों की जो हालत उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष रही है, ऐसी हालत तो किसी ग्राम प्रधान की नहीं होती। वन मैन आर्मी, वन मैन शो, एक कम्युनिटी का राज पूरे देश ने महसूस किया है। जिस गन्ना मंत्री की हम बात कर रहे हैं, उस गन्ना मंत्री पे हर आक्षेप लगे, लेकिन उसका एलिवेशन किसी पे नहीं रुका। वो राज्य मंत्री से कैबिनेट हो गए, लूट तंत्र जारी रहा। एक उदाहरण देता हूं सुजीत भाई, प्लीज। बागपत की गन्ना मिल 30 करोड़ के घाटे में थी जिस दिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और गन्ने की रिकवरी 8% होती थी। आज गन्ने की रिकवरी ऑन रिकॉर्ड 12% होती है। और आपको पता है कि मील पे घाटा कितना है? 80 करोड़ रुपए, सब बंदरबाट। तो हर मिल का यही हाल है। करेक्ट सर, 1 मिनट मुझे तिवारी जी से भी ये क्वेश्चन पूछना है, आप अभी जुड़ गए हैं। मिस्टर तिवारी, आई वांटेड टू आस्क यू, who are, I mean, same question which I asked both these gentlemen, who are people voting for, Modi or Yogi in this election? Mr. Tiwari, you are... Hello. Yeah, I can hear you now. Yes. Yeah.
So one third voters in any election vote on the basis of leadership. And since it is a state election, people will be voting on the performance and the track record of the Yogi government because they've already given first class grade to Modi ji in 2019 election. So however hard BJP would try to make it a Modi plus Yogi versus Akhilesh election, it will largely be centered around the Yogi versus Akhilesh election. Prashant, then I would like to ask you a question. Mood of the Nation says that 75% of people in Uttar Pradesh has said that Modi is good, his performance is good. 9% feels that it's average, and 16% feels it's poor. Do you agree to this research, this study? Problem with me in this study or whatever the survey which comes on the television, whatever I have learned in my school and college, that there should be some methodology to get the result of a research. So basically they don't, उसमें sample size क्या है, अर्बन है, रूरल है, दलित है, अपर कास्ट है, महिला है, पुरुष है, एज ग्रुप क्या है, ये सारी चीजें बताए बिना ही अगर आप कोई भी सर्वे मार्केट में लाते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फ्रॉड, वो कभी भी सही नहीं हो सकता। ये बात सबको समझना चाहिए। टेलीविजन पे जो भी हम लोग देखते हैं रोज, ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का वोटर पे कोशिश करते हैं कि देखो ये लोग वो सर्वे में ये जीत रहे हैं, सर्वे में वो जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम किसी भी सर्वे को सही नहीं मान सकते, वो फ्रॉड ही होगा। झारखंड जी, व्हाट्स योर ओपिनियन? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखिए, अभी मैं आई वॉज सो एस्टोनिश टू सी, एक जी न्यूज पे सर्वे था कि हिंदू इतने परसेंट, जाट इतने परसेंट। तो दे हैव डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन हिंदू एंड जाट्स। तो जाट्स तो अपने आप में I think we have lost the connection. Mr. Tewari, what is? सुजीत नहीं, भाई, So, yes, yes. मैं कह रहा हूं कि जाट्स तो इस समय आंखें बंद करके भी भारतीय जनता पार्टी को दिख रहे हैं, खुले तौर पे भी दिख रहे हैं, उनके सपने में भी आ रहे हैं। और मीडिया कह ही रहा है कि जिधर जाट उधर ठाट। लेकिन जाट किसी भी आंदोलन का अगवा जरूर है, लेकिन सामूहिक तौर पे किसान है। और हमारे युवा पढ़ाई की तरफ आकर्षित हैं। रोजगार में जितनी, आप पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि पुलिस के दरोगाओं की नौकरी लगने के मतलब ट्रेनिंग होने के बाद अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। वो अपनी वर्दी की तरफ रोज निगाह रखे हुए हैं कि कब तक नियुक्ति मिलेगी। 7-7, 8-8 महीने हो गए और ऐसा नौकरी ऐसी कोई नहीं हुई जिसमें आवेदन किया हो, रिटर्न का एग्जाम दिया हो और एग्जाम आउट ना हुआ हो पेपर। तो एक एक नौकरी के लिए 3-3 बार आवेदन लोगों ने किया। घर घर में एक बहन बैठी है जिसकी शादी होनी है, माँ बाप सोच रहे हैं बेटे की नौकरी लग जाएगी तो हम फिर पैसा इकट्ठा करके बेटी की शादी कर देंगे, इतने इसकी पढ़ाई करा देते हैं। तो ये आक्रोश पेट की आग का है, ये आक्रोश मुद्दों का है और असल मुद्दों पे ये आना नहीं चाहते, इसलिए हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। चुनाव असल मुद्दों पे होगा तो ये 100 से भी कम सीटें पाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो हम तिवारी जी, लास्ट इज योर व्यूज आल्सो गुड 75%, एवरेज 9%, पुअर 16%. Do you agree to this research? Is it of times now? No, it's a mood. टाइम्स नाउ भी तो देखिए, वैन को भी योगी जी ने It's I रवाना think किया। Navika Kumar is more desperate than Yogi Adityanath. it is mood of the nation. It's a India Today It could survey. be 50. Same. I think we've lost Tiwari ji at the moment. Sir, with your permission, I'm so sorry, Aarti. I've been asking all the questions, so please, my apologies, but it was quite interesting. Jakar Chap, last question आपको. If Mr. Jain Chaudhary joins Bharatiya Janata Party, would you still support RLD?
सुजीत भाई, जयंत चौधरी को ज्वाइन करना होता 2014 में करते, जयंत चौधरी को ज्वाइन करना होता 2017 में करते, जयंत चौधरी को ज्वाइन करना होता 2019 में करते। जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्प है उनका। देखिए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता किसी पार्टी के लिए कि उसका एक एमएलए आया और वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर जाए, लेकिन वो अपने फैसले के लिए अडिग है। ऐसा नहीं कि आज अमित शाह ने कोई प्रलोभन दिया है, ये प्रलोभन का जो रास्ता है लगातार पिछले 7-8 वर्षों से चल रहा है। लेकिन ना तो वो अपमान भूला जाएगा जो चौधरी चरण सिंह का सामान 12 तुगलक रोड से सड़क पे रख दिया गया, ना वो अपमान भूला जाएगा जो हाथरस में जयंत चौधरी के साथ किया गया, और जो किसानों के साथ हुआ और हरियाणा के जाटों के साथ हुआ, ये भी जहन में है। इसलिए कभी भी राजनीति टुवर्ड्स बीजेपी क्या वैमनस्यता छोड़ सकती है? अगर बीजेपी वैमनस्यता छोड़ लेगी तो शायद जयंत चौधरी ज्वाइन कर लें, ऐसा मुझे लगता है। यस प्रशांत, लास्ट वर्ड। आरएलडी के जो छपरौली से जो विधायक थे सहेंद्र रमाला, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, उनको पार्टी से निकाला गया था। ये भी जनता के पास मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग के समय पार्टी के आदेशों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण उनको पार्टी से बर्खास्त किया गया था, जिसके बाद उन्होंने तो भाजपा तो रिजेक्ट मान लेने के माहिर है ही है। हमने रिजेक्ट किया, उन्होंने उठा लिया। और देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, किसानों का वक्त खराब हो सकता है, रक्त नहीं खराब होगा। तो इसके लिए वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ बने रहेंगे। So I think the takeaway from this entire discussion is that the Jat voters are still sticking to the SP and RLD alliance as far as we are committed, ma'am. You're committed. Yes, that is what the entire mood of the nation. I'm sorry, mood of the Western Uttar Pradesh. आरती, you're taking somebody else. सच्चाई आ गई आरती के मन में भी। देश की 90 लोकसभाओं पे प्रभावित करेंगे हम। Well, thank you so much all for joining us in this discussion. I think this discussion was very much interesting, and also it was very knowledgeable to hear all these things. And I think people who talk about voters vote only on caste lines should hear Rohit sir and also Prashant, because a lot of interesting details that you are talking about, I think people don't know on the outside, so they believe everything works on polarization in the election, but that is not the case. And thank you so much for pointing out all those details. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you, ma'am.